Yes, so we are in the suspension system. So what is the suspension? I am just rewinding the things what we are learned. So suspension system is actually a term. I already told you it is a actually a mechanism which is built in between the chassis, between the chassis and the axle. Okay, so when I say suspension, what I mean by the suspension, so suspension, what I mean by suspension, it is a system of consisting of springs, shock absorber and linkages that connects the vehicles to the links. So it serves dual purpose, contributing the car's handling and the braking. It also protects the vehicle itself. So generally we have, I have already told you this, generally we have got the suspension system, our main aim with a comfortable drive. We want comfortable drive. So the purpose of the suspension system, it is supporting the weight, providing the smooth ride, allowing the rapid cornering, keeps tires in firm contact with the low road, and allows the front wheels to turn side to side for steering, and also works with the steering system to keep wheels in the correct alignment. And finally, isolate the passenger and the cargo from vibration. Yeah, I already told you we are moving toward the comfort zone. We are moving to the comfort zone if we are going for the suspension. So what are the basic part? I have already told you the basic part of the spring. Another parts, they are the control arms. So this you can see, this is a lower control arm, upper control arm. So you have got lower control and upper control, and they are the movable lever that fastens the steering knuckle. So you can see this is the steering knuckle. ये upper arm हो गया, ये lower arm हो गया, ये steering knuckle हो गया, ये king pin होगी, ये तुम्हारा stub axle होगा जिसको जो wheel को लगा रहे, ठीक है. So the steering knuckles actually are used to, this is the steering knuckle. So you are actually turning, you are giving the angular movement to the wheels, and a steering knuckle is used to give angular displacement to the steering wheel. So the ball joints are there, the swivel joint that allow control arm and steering knuckle to move up and down and side to side. The springs support the weight of the vehicle. These are the basic parts. The shock absorber, they are also called dampeners. So we want to avoid the oscillation. If we are using only springs, there would be oscillation. So that oscillation is stopped using the shock absorber. So you have got a control arm bushings. You can see here bushings. These are allow the controller to swing up and down on the frame. So this can move. This can move here, from here it can move. So two types of suspension system already talked: non-independent and independent suspension. So if I say this is a non-independent, it has both right and left wheel attached to the same solid axle. So when it is a non-independent wheel, what happens? When one wheel hits the bump on the road, its upward movement causes slight tilt of the other wheel also. But in the independent, that doesn't happen. यानी एक व्हील बम्प में गया, दूसरे व्हील को कुछ नहीं होगा. यहाँ पे एक व्हील बम्प में गया, दूसरे व्हील पे भी इफेक्ट होगा. दैट इज व्हाट आई एम टू टेल यू. सो यू कैन सी ओवर हियर, यू कैन सी ओवर हियर. सो ये जो है ये नॉन इंडिपेंडेंट है. इसमें कैसा है, और देखो ये बम्प के ऊपर गया, दिस व्हील हैज गॉन ऑन बम्प. ये दिस इज बम्प, दिख रहा? कैन यू सी द बम्प ओवर हियर? एनीबडी कैन टेल मी? Can Yes, you sir. see? Yes, you can see a bump over here. अब ये जो बम्प यहाँ पे है, व्हाट इज हैपनिंग, ये व्हील तो टिल्ट हो गया और इसको भी झुका दिया. देखो ये तो टिल्ट हो गया, इसको भी झुका दिया. सो वन व्हील इज टिल्टेड, अदर व्हील इज ऑल्सो टिल्टेड. बट नाउ इफ यू हैव एन इंडिपेंडेंट, हमारे पास अगर इंडिपेंडेंट सस्पेंशन है, सो दिस इज बिंग, देखो ये टर्न टिल्ट हुआ थोड़ा सा, बट यू कैन फाइंड दिस इज इंटैक्ट, दिस इज इंटैक्ट. देखो ये पूरा पूरा वर्टिकल है, ये जो व्हील है ना वर्टिकल है. यहाँ पे ये व्हील देखो, ये वर्टिकल से थोड़ा सा टिल्ट हो गया है. तो ये कैसा है, नॉन इंडिपेंडेंट भी डिपेंडेंट सस्पेंशन है, ये इंडिपेंडेंट सस्पेंशन है. ओके. The suspension system, again you can find here the upper control arm, the lower control arm, the ball joints over here. ये ball joints आपको दिख रहा है, ये coil spring है, ये stabilizer है. So you can see the shock absorber inside the
कॉइल स्प्रिंग। ठीक है, दिस लीफ स्प्रिंग है यहाँ पे। देखो मैं बता रहा था, बार बार आपको बता रहा था कि दिस इज बिंग फिक्स्ड, द लीफ स्प्रिंग इज बिंग फिक्स्ड एट वन एंड एंड अदर एंड इज shackled सो दैट यू गेट मूवमेंट। यहाँ पे आपको मूवमेंट मिलेगा, यहाँ पे आपको मूवमेंट देखेगा। एक आधे ट्रक के पीछे वगैरह गए क्या आप लोग? कोई ट्रक के पीछे गया है कभी? तो ट्रक के पीछे अगर नहीं गए तो थोड़ा जाके देखो तो आपको समझेगा। जो व्हेन देयर इज अ बम्पी राइड दे जस्ट मूव ऑन, जो भी यानी जो बम्प्स है रोड के ऊपर, जो बम्प्स रहते हैं उसके ऊपर अगर जाता है, सो व्हाट विल हैपन नाउ, यू कैन सी द मूवमेंट ऑफ द शैकल्स ओवर देयर। देखेगा भी शैकल का मूवमेंट किसी ने? एक यस ने सर, देखे। देखे है ना? सो दैट इज द यस। शैकल्ड, उसको हम शैकल्ड बोलते हैं। सो शैकल्ड इज आल्सो पार्ट ऑफ द सस्पेंशन सिस्टम। सो यू कैन सी दिस इज द शैकल। तो क्या क्या यहाँ पे देखो, ये स्प्रिंग्स हैं, देर नंबर ऑफ स्प्रिंग्स वर देयर। ये सेंटर बोल्ट है यहाँ पे, ये शैकल्ड है, दिस कॉल्ड एन आई, ये फिक्स रहेगा। ठीक है, दिस आर द क्लिप्स, ये क्लिप्स है। ये सेंटर बोल्ट है, यहाँ पे यू बोल्ट लगा के इसको फिक्स करेंगे, ये क्लिप्स लगा के एक जगह पे रखेंगे। ठीक है, और ऐसा जब मूवमेंट आता है इसके ऊपर, तो दिस दिस शैकल गिव्स द मूवमेंट टू द स्प्रिंग, सो इट इज कॉल्ड एज शैकल्ड। So you have got a coil springs. So generally you have got coil springs. You have got a coil spring. I already told that we are using the, with the coil springs we are using the shock absorbers also used. So torsion bar. So one end attached to the wheel frame, other to the end of the wheel arm. Huh? So it moves up and down the torsion bar. It get twist. Again comes back. So torsion bar आपको बताया था मैंने, torsion bar. So attached to the frame, one end, other end connected to the lower arm. So it get twisted movement first and then untwist, twist, untwist. So it is absorbing the vibration. So shock absorbers already told you, this is the shock absorber. Again, I'm just telling you in short. So again, this happens to be lower arm. ये मैकफरसन स्ट्रट है, तो मैकफरसन स्ट्रट में ये लोअर आर्म रहेगा। आपको मैंने बताया था, हियर यू हैव गॉट स्ट्रट, स्ट्रट के ऊपर क्या है, स्प्रिंग, स्प्रिंग के नीचे अंदर में क्या है, दिस इज शॉक एब्जॉर्बर। शॉक एब्जॉर्बर में क्या रहता है, ये रहेगा सिलेंडर ट्यूब और ये रहेगा तुम्हारा रिजर्वायर ट्यूब। पिस्टन में क्या रहेंगे, पिस्टन में रहेगा, you have got holes, you have got holes in the piston. So जब भी ये compress होगा, when it is being compressed, when the shock absorber is compressed, the fluid from the cylinder tube enters the reservoir, so the compression load is adjusted. So when it is lengthened, elongate हो रहा, so when it is elongated, so this fluid from the this is the reservoir moves inside the cylinder tube via holes in the piston and the shock is absorbed. शॉक इज अब ये लेंथन कब होगा, जब ये पॉथ होल में जाएगा। ये कॉम्प्रेस कब होगा शॉक एब्जॉर्बर, जब बम के ऊपर जाएगा। सो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग्स। सो दिस अ मैकफरसन consisting of, already told you, you have got a spring, then you have got a shock absorber, you have got a strut, you have got a lower arm, and this is being adjusted or attached to the wheel. So strut assembly I already told you. So we move to another one. This is also one nice transparency presentation I have got, that I am just showing you. So already told you, I think. Huh? So already this is being told to you. So here just this things I have already told you. I'm just stopping my